बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पढ़ा क्या इसमें? इसके क्या बोल? हाँ, अरेज लूप्स हो गया। हाँ ठीक है ना, एसटीडी अरे वगैरह हो गया। ठीक है ना, बाद में देखिए। और फिलहाल हम इफ एल्स स्विच फंक्शंस वो करेंगे आज। ठीक है, हमारा बेसिक पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम वो वाले पार्ट करेंगे, इसके ऊपर एक्चुअल पार्ट जो है। ओके, we will say echo and definitely we're gonna go for the new line, say br tag and terminator. Just copy it, control C to copy it. Now all of the if else is simple as it is. If else are very simple, huh? This is same C, but just for the showing purposes we will go for it, otherwise it's nothing. Like we got a dollar, we got dollar a equals to 9, and I say if a equals to 9, then equal, okay. I could say else equal, not equal. What happened? Else equal, not equal, right? Equal, equal, control S, and definitely it's going to be equal. Have anything wrong? Why is it not showing? Equal else, control S kora me. Why is it not live server type? Fatal error, undefined constant a. Oh, dollar a, man, dollar a, dollar a. Don't forget it's a PHP. Okay, still not working. Equal, right? मैं कासिम सर इसमें लॉगिन उसका है, that's why maybe local host कल करना उसका लैपटॉप हो गया ना खराब. हाँ यही वाला है ना. But if I say here, for example, 19, control S is going to say not equal. And if I say 9, it's going to be equal. And I say it in a quotes, it's still going to be equal, right? Why? Because it will say the contents. But if I say triple equal to, now it's going to be not equal. Why? Because triple equal, it also checks the data type. Not only it checks the content, it also checks the. Does it make sense? So it has all those things what the normal language has. Okay. If else, for example, we have a grade program. Okay. We say hash, say for example, grade equals to a. Yeah, dollar a. Dollar grade is equal to a, for example. Okay. We're gonna go for the if else. You can nested ifs and everything whatever you like to do. But how we go for if? I say dollar grade equals to capital A, and I could say or, right? Either say or like this, or you say double pipes. Both ways work. Or dollar grade equals to small a, right? Then what are you gonna do? Maybe I say echo. Excellent. Then we have else if. We have what? There's no gap between else if. Else if dollar grade equals to b, or dollar, same way you have, you have or, and you can use and or double ampersand, you can have not, xor, these are all here. Okay, and or xor, whatever you want to do, all those logical operators are here. Okay, you can test them. Equal to small d, then you're gonna echo what? Echo good. Maybe I say good. Right now I just go here, I just
Control C, then I go here, Control V, Control V, Control V. Okay, this one is for the grade C, capital C or small c, and this one is for the capital D. If this is D grade, for D grade we say it's a bad. It's what? It's bad. For say we say not good. For C we say not good. And this is only the else part. Okay. At the end it's got to be the else, where we say wrong input. Right? We say echo wrong input. That means input was not good. Simple. This is what we have done all the time, right? Nothing to do. So right now we have fatal error. Why a fatal error? There's some issue. We say firstly I will put one thing, Control V here, Control Z. That was this thing, echo br. C, copy it. Here, Control V. Now we say grade A is equal to A. This should be in the quotes firstly, not in a open. So this is saying excellent, okay? Because this is A. If it was small b or capital B, it's gonna be good. If it's gonna be something like Y, which is not there, it's gonna be wrong input. Simple as it is, right? I will not put more details in it. It's just the same thing you have read all the time. Now, if we put the same thing in a switch, same thing in a switch is again the same thing. Switch is again what? Control V, Control S. Now, same like a C switch. Switch, what do you switch? Grade. Dollar, but don't forget dollar. This is the PHP. Now, what do you have in a switch? We have case. For example, case capital A. Case what? A colon. I could have also with it case small a. If it is small or capital, in both cases it should do this thing. What it should do? It should echo XCELLENT. Then after you are done with this, what you will do? You will break, right? Same is then the case B, C, D, and all cases accordingly go to that. Okay, and in the end we have a default. समझ में आ रहा है ना? In default I say echo. Default कब चलेगा? ये हमेशा ही चलेगा, चाहे कोई चलेगा ना चले. डिफॉल्ट चलता है हमेशा. क्या बोल रहे हैं आप? ठीक है. अगर आपका ग्रेड ए यहाँ पर है, ये तब भी चलेगा ना. ग्रेड इसमें अगर ए डालेंगे हम, वो चलेगा एक्सलेंट. डिफॉल्ट तब भी चलेगा ना. डिफॉल्ट इट इज नॉट एल्स पार्ट. उसका एल्स जो है ना वो डिफरेंट होता है. एल्स तब चलता है जब एल्स में कोई नहीं चला तो लास्ट वाला एल्स चलेगा. लेकिन इसमें डिफॉल्ट runs always. Control S. It is saying excellent. It is saying what? Excellent. Because we said break. Okay, yeah. It will not. Sorry. It will break. Default का ये होगा. Basically, it will break. जब ये break हो गया तो switch के बाहर निकलेगा. So it will not run. Yes. क्योंकि अगर हमने ब्रेक नहीं मारा तो तब चलता ना ये. Yes. जब जो ब्रेक मारेगा तो कहाँ चलेगा? है ना? Because break इसको बाहर ही ले जाएगा. ठीक है. A little confusion. Now that's all for switch. We know all these things. Huh? Now we have the switch. We have the functions. We have what? The functions where we have default values, where we return values, where we pass values, and we pass by reference. All those things. Okay. Control V. Switch का अपना ये भी होगा ना, Control Z. Switch का अपना brace कहाँ है वो? ये है. Okay. Now we have function. I say function. Say for example, fun is my function, some function, right? What I say echo inside function. Inside
Now we are saying we were inside the function. Control S. Will it run? Why? You need to call it somewhere. Okay, you call it down, you call it anywhere, anytime, wherever you want to call it. Maybe I call it here fun. Now I call the fun, and now it's gonna work inside function. Okay, that br tag has to be somewhere. Control V, Control S. Now inside the, so this is the function call, this is the function definition. Now if I'm sending something to it, say I am sending it 4. Now it's copying it, okay, into dollar $a, for example. I say inside function value is equal to, I'm gonna print this dollar. It is in double quotes. I don't need to do anything. It will see what is dollar $a. So it's saying inside function value is equal to. Does it make sense? If you're not sending anything, then what will do? You are catching there. You're catching here, okay, but you are not sending anything. What will happen? There will be an error. Simple as it is. क्योंकि जो आप ले जाओ वहाँ पकड़ ही नहीं रहे हो, ठीक है? तो उस सूरत में हम डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं equals to 99. अगर आपने नहीं भेजा, oh my, equals to 90. अगर आपने नहीं भेजा तो 99 लेगा, अगर भेजा तो 80 लेगा, ठीक है? तो इससे एरर बच सकता है क्योंकि दिस कॉल्ड डिफॉल्ट वैल्यू. इट्स कॉल्ड व्हाट? Now I want to return. I want what? I just want to return all of this thing, not echo here, but return this. Then I say return, simple as it is. Just return this whole thing. But when I return, to whom I return? Then I need to catch where you called. You need to say यहाँ से ये यहाँ से रिटर्न हो गया ना, कहाँ गया ये फंक्शन, यहाँ पे रिटर्न हो गया ना, ये यहाँ से रिटर्न होके जाएगा किसके पास, तो यहाँ पकड़ना पड़ेगा इसको. So what should I do? You need to catch here. Either I simply echo it, no problem. Then we are good. Okay, function is equal to 8, or I can put it into some variables. Dollar, say for example, return equals to fun8. Control S. It will not show it because it's now in where R. Now I can print the R. Echo. I could say return value. Returned value equals to dollar. Does it make sense? Now it's saying it is returning successfully. Okay. उस फंक्शन को हमने भेजा कुछ 8. Okay. उसने ये whatever it does on that, it returns something. That something is on R, and that R I printed with some our own message. ठीक है ना? Okay. We are actually going today to university for awards and all. ठीक है ना? Awesome service for जिनका लैपटॉप खराब हो गया ना, और उन्होंने कहा रखा अब अवार्ड यूनिवर्सिटी के दायरे में ही होगा, उनकी नेटवर्क के अंदर ही, यहाँ से नहीं होगा. So we need to go there. We'll do last thing here, that is pass by reference. pass by swap function कर देते हैं ना C में पहले से एक swap function करेंगे हम. क्या लिखेंगे function करेंगे तो क्या लिखेंगे पहले function, the keyword function. Then I call the swap. उसको मैं 2 नंबर्स भेजूंगा, एक पकड़ूंगा मैं डॉलर A में और दूसरा पकड़ूंगा मैं डॉलर B में. और इसको फिर क्या करेंगे, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, ठीक है ना? So we have dollar T, dollar is equal to dollar A for example, और डॉलर A में क्या डालेंगे हम, क्योंकि डॉलर A का वैल्यू हो गया ना सेम, डॉलर B, और खुद डॉलर B में क्या डालेंगे, dollar B equals dollar T. Done. Now we call this function somewhere. I call this function swap. Okay, but before that I need to create 2 variables. For example, I'm creating 2 variables. Dollar A equals to, for example, 9. Okay, and I'm gonna have a dollar B equals to whatever 6 or 10. I don't know. Okay, so only goes to 6. Now I need to call the function swap and send them. How? What should I send them? 9 and 6. Yeah, dollar A and dollar B. This is the call.
Now look here, this $A and this $A has nothing to do with each other. This is different. I could say here CD, okay, but I just kept the same name, but it doesn't matter because this is local to this function only, and this A and B is here. So if I am swapping it here on this A and B, okay, if I say inside function, echo echo echo, what is some br tag, then say inside function, inside A equals $A, B equals to $B. डॉलर लिखना मुश्किल हो जाता है, जाना पड़ता है, आदत PHP की कमी आदत है ना, ओके। अब मैं यही चीज करूंगा फिर, लेकिन बाहर कहाँ, कॉल के बाद कंट्रोल C, स्वैप कॉल के बाद करूंगा कंट्रोल V, ओके। दिस इज आफ्टर फंक्शन कॉल, ठीक है, कंट्रोल S। अब जो इनसाइड होगा वही आउटसाइड होगा, ठीक है। ये लेकिन चेंज हो गया लगता है, इनसाइड फंक्शन, हाँ इनसाइड फंक्शन चेंज हो गया ना, इनसाइड जो फंक्शन है वो चेंज हो गया ना, A में 6 हो गया, B में 9 आ गया ना, बिफोर भी कर लो कंट्रोल V, बिफोर फंक्शन, बिफोर क्या था, A में 9 B में 6 था ना, जब इनसाइड फंक्शन आ गया A में 6 B में, लेकिन वापस जब हम आ गए उसके उस फंक्शन की बात बाहर, तो अपना ही 9 6, यानी कि A और B में फर्क नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि ये A एंड B जो है लोकल है टू दिस फंक्शन, तो आपने इनके साथ क्या किया, इट डजंट मैटर, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्वैप छोड़ो, $B में आपने डाला 9999 कंट्रोल S, अब B में 999 है, लेकिन इस B को उस B के साथ कोई वास्ता नहीं, है ना, because this A and B are local to this function only। यहाँ आप CD भी लिख सकते हो, जो भी आपकी मर्जी लिखने की हो, लेकिन जो आपने कॉल की वहां के जो वेरिएबल्स हैं उनको इन वेरिएबल्स का कोई वास्ता नहीं है, ना वास्ता हो, यानी कि जो भी काम हो वो एक्चुअल वेरिएबल्स में हो, तो हमें नहीं भेजना चाहिए A and B एज अ वैल्यू, हमें भेजना चाहिए एज अ रेफरेंस, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जुनैद सर इधर है, इसकी कॉपी मैंने भेजी उधर उस जुनैद सर को, उस जुनैद सर ने वहां पे खान ड्रेस पहना, तो मेरे में कोई चेंज नहीं आ रही, ठीक है ना, बिकॉज मैं और उससे वास्ता नहीं। लेकिन अब जब वो हम जहां जा रहे हैं वो मैं उसकी कॉपी नहीं जा रही है, बल्कि उसकी रेफरेंस, वो मेरी एड्रेस दे रहे हैं, यानी कि उधर जो भी होगा दस्तारबंदी होगी किसके हो रही है, मेरी हो रही होगी, सो ठीक है ना। तो मतलब ये है कि इसको C++ की तरह करेंगे, बताओ कैसे करेंगे, C++ कैसे करते हैं, एम्परसेंड कहाँ लगाते हैं, एम्परसेंड कॉल के पास, यहाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ C++ हो गया, C का तरीका एम्परसेंड, यहाँ लगा लो एम्परसेंड, बस और कुछ नहीं करना, यहाँ एम्परसेंड लगा लो। ये वाला मैं बंद ही कर लेता हूँ क्योंकि स्वाप देखेंगे ना हुआ कि नहीं। अब जो अंदर हुआ है वही बाहर हुआ है, पहले 9 6 था, अंदर 6 9 है, जब उसके बाद हम फंक्शन से बाहर आए वो उधर भी 6 9 है, क्यों, क्योंकि हमने पास बाय रेफरेंस भेजा, जब हमने पास बाय रेफरेंस भेजा तो जो भी चीज यहाँ पे हो रही है वो किस पे हो रही है, इस A एंड B पे, है ना। अगर मैं यहाँ पे ये B हटा दूं 9 लगा लूं, तो B के अंदर जब हम वापस आ गए बाहर इस कॉल के बाद, तो B में वही वैल्यू है, क्योंकि जो भी आप काम यहाँ पे करोगे दैट इज हैपनिंग टू द एक्चुअल वैल्यूज, ठीक है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, hopefully we continue on this and we go for the advanced PHP by tomorrow.